Hi and hello everyone. Welcome back to English Education Adda. Today we'll talk about spoken English. It's the first part. So I hope you are ready to learn. But before starting, if you're new on this channel, kindly subscribe, like and share new groups. Right? So now today we have to talk about right? We have to talk about because जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो अबाउट से लेते हैं, राइट? तो आज अबाउट के बारे में ही पढ़ेंगे, राइट? कि अबाउट से रिलेटेड हम कैसे स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, राइट? तो चलते हैं कि अबाउट के बारे में क्या होता है। अबाउट मीन्स के बारे में। अबाउट का मतलब बहुत सारी चीज होते हैं, लेकिन हम अभी के बारे के अर्थ में इसे हम स्पोकन के तौर पे सीखेंगे, राइट? तो अब यहाँ देख चलते हैं अबाउट दिस यानी इसके बारे में, अबाउट दैट यानी सब जगह अबाउट लगा हुआ है, केवल आपको एक बार रिविजन करना है, बोलना है, राइट? तो अबाउट दिस, अबाउट दैट, अबाउट यू, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट दिस सब्जेक्ट, अबाउट हिस्ट्री, अबाउट माई लाइफ, about my career, right? So now see this about this, about that, about you. So here this is about this. You haven't think about this. आप इस चीज के बारे में नहीं सोचे हैं, right? About that यानी उस चीज के बारे में, उसके बारे में. So you have thought about that. आप उसके बारे में सोचे हो या सोचते हो. You have thought about that यानी आप उस चीज के बारे में सोचे हो. लेकिन अगर हम इस तौर पर देखें कि प्रेजेंट टेंस में अभी की बात करें, अगर प्रेजेंट की बात करें तो आप उस चीज के बारे में सोचते हैं, तो यू थिंक अबाउट दैट, राइट? सो वी हैव टू जस्ट मेक फीलिंग्स, अदरवाइज स्पीकिंग इज नॉट पॉसिबल. Everything is possible, right? So nothing is impossible, everything is possible. English is possible for you and you can learn very fluently, right? So this thing that about that, so you have thought about that, I have thought about that, somebody has thought about that. So something like that you have to use, you have to make like this. Okay, about you, I am thinking about you. मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं आपके बारे में सोचता हूँ. I think about you, right? बट आई एम थिंकिंग अबाउट यू, ये क्या है कि कंटिन्यूअस में बात कर रहे हैं, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, राइट? सो नाउ दिस अबाउट योर फ्यूचर एंड आपके फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, राइट? सो आई थिंक अबाउट योर फ्यूचर, मैं आपके भविष्य के बारे में सोचता हूँ, राइट? आई एम रियली थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, रियली आपके फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट अबाउट योर हेल्थ, आपके हेल्थ के बारे में, राइट? आपके स्वास्थ्य के बारे में. तो अबाउट योर हेल्थ, he thinks about your health यानी आपके स्वास्थ्य के बारे में वो सोचता है, वह आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, यानी really he thinks about your health. You can also say I think about your health, somebody think about somebody's, right? So but we are talking about health, so I think about your health. Now next about this subject, I have learned about this subject, I have discussed about this subject, right? But we say also say that कि now this I discuss about this subject यानी मैं इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ, राइट? नाउ नेक्स्ट हिस्ट्री यानी आई थिंक अबाउट हिस्ट्री, आई लर्न अबाउट हिस्ट्री यानी दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर थिंकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डूइंग अबाउट, यानी देयर इज मेनी थिंग दैट रिलेटेड टू अबाउट. ओके, सो नाउ देयर इज नेक्स्ट माई लाइफ, आई डोंट थिंक अबाउट माई लाइफ, दिस आई एम थिंकिंग दैट आई डोंट थिंक अबाउट माई लाइफ. I also care about somebody's. This I always speak related to about, right? So now this see there about my life. Don't think about my life. Sometimes we discuss with someone. I always say that don't think about me. Don't think about my life because it's my personal matter. I never don't interfere in my life, right? Something like that. Now next, my career. It's my career. So now think about your career. Think about my career. Here there is your career, so now you can do as per here my career. Okay, so now think about my career. It's very important for me. Think about my career. So now you're looking at these are the keywords. It's very important. If you do like that, obviously that sentence will be very easy for you. So I just think about. Many times he's using about. So it's very important. Please speak on that. Now we'll make practice about लगभग यानी अबाउट का मतलब क्या होता है? लगभग. यानी सी अबाउट 6 years ago, अबाउट 2 meter tall यानी लगभग 6 साल पहले, लगभग 2 मीटर लंबा, अबाउट 2 hours लगभग 2 घंटे, यानी सबका मतलब लगभग के इसमें है, राइट? ना अबाउट 100 people लगभग 100 लोग, अबाउट 100 rupees लगभग 100 रुपये, राइट? अबाउट 2 years लगभग 2 साल, अबाउट 5 o'clock लगभग 5 बजे, अबाउट 2 months लगभग 2 महीने, राइट?
तो जिस वी हैव टू रीड आउट एंड वी हैव टू मेक convert in spoken, right? So about 6 years ago, about 2 meter tall, about 2 hours, about 100 people, about 100 rupees, about 2 years, about 5 o'clock, about 2 months, right? So first we'll take about 6 years ago. So I have done this work about 6 years ago. यानी मैं इस कार्य को किया था लगभग 6 साल पहले, right? So about 6 years ago, I had come here about 6 years ago. मैंने यहाँ मैं 6 साल पहले आया था, right? About 2 meter tall. It is about 2 meter tall. It is about 1 centimeter, right? So now यह लगभग 2 मीटर लंबा है. It is about 2 meter tall, right? Now next we'll talk about 2 hours. यानी लगभग 2 घंटे. तो I have about 2 hours. लगभग मेरे पास 2 घंटे बचे हैं, right? So in condition we can say that I have about 2 hours. Okay, now next 100 people. So about 100 people are living in this society. यानी about 100 people living in this society, about 100 people are engaged in that work. यानी लगभग 100 लोग उस काम में लगे हुए हैं. तो लगभग की स्थिति में हम इस तरह से इसे यूज करेंगे, राइट? I have about 100 rupees, right? So I have about 100 rupees. I have about 500 rupees. I have about 10,000 rupees. So in these cases we can